Assalamu alaikum everyone. I am sure you are all doing well. Today's video comes with another experiment. These days I am constantly trying out new experiments. Some are floating in my mind while others are inspired by different sources. But I believe that whatever you want to do in silk painting, it will take you to the next step of learning. Today we will doing a masking tape experiment combined with the salting technique. I am truly grateful for the love and prayers you have shown me and for enjoying my videos. Thank you so much for your support. Before we start, if you are visiting for the first time, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss my upcoming videos. Also follow me on Instagram and Facebook. Let's start today's video. आज मैं ये एक्सपेरिमेंट कॉटन फैब्रिक के साथ कर रहा हूँ। कॉटन को अच्छी तरह फ्रेम पे स्ट्रेच करने के बाद कोई से भी साइज़ की मास्किंग टेप लेकर उसके पीसेस को कॉटन पे लगाते जाएं। टुडे आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑन कॉटन फैब्रिक। आफ्टर प्रॉपरली स्ट्रेचिंग द कॉटन ऑन द फ्रेम, टेक मास्किंग टेप ऑफ एनी साइज एंड अप्लाई इट्स पीसेस ऑन टू द कॉटन। आप मास्किंग टेप से डिज़ाइन भी बना सकते हैं और रैंडमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसलिए रैंडमली मास्किंग टेप को पेस्ट करूँगा। यू कैन क्रिएट अ डिज़ाइन विद द मास्किंग टेप और यूज़ इट रैंडमली। सिंस आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई विल अप्लाई द मास्किंग टेप रैंडमली। मास्किंग टेप लगाने के बाद कॉटन पे हल्का सा पानी स्प्रेड करें। मैं वाटर शावर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप स्पॉन्ज की मदद से भी पानी लगा सकते हैं। After applying the masking tape, lightly spread water over the cotton. I am using a water sprayer, but you can also use a sponge. पानी लगाने के बाद कॉटन पे कलर लगाना शुरू करें और इस बात का ख्याल रखें कि मास्किंग टेप ना उतर जाए। After applying the water, start adding color to the cotton. Make sure the masking tape doesn't come off during this process. मैं एमरल्ड ग्रीन और डार्क ग्रीन सिल्क पेंट यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग एमरल्ड ग्रीन एंड डार्क ग्रीन सिल्क पेंट। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। आज की वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैं कॉटन पे सिल्क पेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। और वो सब लोग जो ये सवाल करते हैं कि कॉटन पे सिल्क पेंट्स यूज़ हो सकते हैं या नहीं, आज की वीडियो उनके लिए है। In today's video, you can clearly see that I am using silk paints on cotton fabric. This video is for everyone who asks whether silk paints can be used on cotton or not. कलर्स लगाने के बाद सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें। मैं स्मॉल साइज़ का सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। After applying the colors, sprinkle salt over the fabric. I am using small sized salt. टाइम लैप्स में सिर्फ सॉल्ट का इफ़ेक्ट आते देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ मास्किंग टेप लगाई है वहाँ क्या चल रहा है तब तक नहीं पता चल सकता जब तक मास्किंग टेप नहीं रिमूव की जाती। ओनली द इफ़ेक्ट ऑफ द सॉल्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द टाइम लैप्स, बट व्हाट्स हैपनिंग अंडर द मास्किंग टेप विल रिमेन अ मिस्ट्री अंटिल द टेप इज़ रिमूव्ड। कॉटन मुकम्मल ड्राई हो चुकी है। अब सॉल्ट और मास्किंग टेप को रिमूव कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मास्किंग टेप वाली जगह पे कलर स्प्रेड हुआ है, लेकिन वहाँ सॉल्ट इफ़ेक्ट नहीं आया। इसका मतलब है अगर मास्किंग टेप से कोई भी पैटर्न बनाया जाएगा, वहाँ मास्किंग टेप का इम्प्रेशन ज़रूर आएगा। द कॉटन हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड। नाउ रिमूव द सॉल्ट एंड मास्किंग टेप. As you can see, the color has spread on the areas where the masking tape was applied, but the salt effect did not appear there. This means that if you create any pattern with masking tape, the impression of the tape will definitely be visible. As usual, सिल्क पेंट्स यूज़ किए हैं, इसलिए दोनों तरफ से कॉटन को आयरन करना होगा ताकि कलर्स फिक्स हो जाएं। As usual, since silk paints have been used, the cotton needs to be ironed from both sides to fix the colors. आयरन करने के बाद कॉटन को टैप वाटर में वॉश कर लें
ताकि सॉल्ट कॉटन से रिमूव हो जाए। वॉश करने के बाद कॉटन को ड्राई होने के लिए वायर पे हैंग कर दें। आफ्टर आयरनिंग, वॉश द कॉटन इन वाटर टू रिमूव द सॉल्ट। वंस वॉश्ड, हैंग द कॉटन ऑन अ वायर टू ड्राई। ड्राई होने के बाद कॉटन को दोबारा से आयरन कर लें। आफ्टर इट हैज़ ड्राइड, आयरन द कॉटन अगेन। Presented here is the salt effect with masking tape. I honestly conducted today's experiment this way. If I had known that the masking tape would leave a definite impression, I would have definitely created a pattern with masking tape on cotton. But don't forget to try this experiment and share it with me. If you liked the video, please remember to give it a thumb up, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you for your visit. Take care of yourself and keep me in your prayers. Allah Nigeban.